Chalo. Hello all. Let us today do with the table layout, right? In previous session, in previous video, we have seen frame layout, and now we are going to see the table layout. So right now I have opened up a plain program here. The XML file of this plain program simply has a layout tag, जो कि frame layout है, and its internal file is empty, right? Now we are going to change it to the table. Now before that, let us see what is the purpose of the table layout, right? Before this, let us see what is the purpose of the table layout. So if I wish to draw something, or if I wish to, if this is my screen, say, right, and now if I wish to draw the columns, rather than drawing, see, if I wish to, now whenever I say a table, it simply means this thing. A table, something has a vertical columns and the horizontal rows. This is what the picture of a table come with in front of us, right? So when we say a table layout, this is what that we wish to divide our screen in such a columns and such a rows, right? We wish to divide our screen into such a rows and the columns where all these lines will not be visible to you, right? All these lines will not be visible to you until and unless you mention, right? Then what is the purpose? हम लोग ये row और column से कर क्या रहे हैं? With the help of a row and column, we are creating the cells, right? In which cell now we can place our views or the UI element, जैसे कि हमारा बटन है, टेक्स्ट है, राइट? हमें इस टेबल के फैशन में ये बटन डालने हैं. ऑलवेज फॉर द टेबल व्यू आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में इतने सारे बटन्स हैं, राइट? So all these buttons you need to place into the number of the rows and the columns, right? So this every view we can place inside the grid, inside the box which has been created by the table. Now this is very standard example, right? Now say I can have, if this is my screen, I can have, say this is my first row, यहाँ पे मुझे दो buttons चाहिए. Then I can say this is my second row, यहाँ पे भी मुझे दो buttons चाहिए. Then I can say this is my third row, यहाँ पे मुझे 3 buttons चाहिए. This could vary. Ultimately क्या है? This is what some row wise structure and some column wise structure. So the table layout is needed when you wish to place the UI elements in such a row and column structure fashion, right? Now let us go back with let me show you what output we'll be drawing. Let's say the program we'll be doing right now will be having, say this is my screen, so my program will have one button overall spanning to the first row, and then say I will be placing 3 buttons onto the second row, right? Let us program for this कि row number 1 पे क्या है हमारा एक बटन है और row number 2 पे हमारे 3 बटन है, right? So let us program for it. So for firstly, let me change the layout. As it is a table layout, I'll be erasing or deleting the previous existing layout. Type in capital T table layout, so it has come up to the table layout. So as usual, this is my start of the layout and this is my end of the layout. In between this, I'll be placing my other tags. Now whenever we are creating a table, always we use a table row as an tag, right? We'll be using a table row as an tag. We do not have a table column as an tag. We do not have a table column as a tag. We simply have a table row as an tag. So what we will be doing, we will be creating rows into within these table layout. So say I'll be placing some code to create row number 1. I'll be writing some code to create row number 2 and so on. And inside this row number itself, I'll be placing the data for the columns, right? So I will not be, let us say I'll not be doing anything in for the column. Whatever I'll be placing into the row, it will go on automatically creating the columns inside. So ultimately I'll be writing code only for creating the row.
So let me go and let us put a tag for table row. So obviously, what does it mean? That within a table layout, we will be writing a tag for table row. So this is my start of the table row, and as usual, we have a ID for row. Let's say into the ID, first select the ID folder and say it is my row 1. Now we already know ID is a unique identifier for that particular UI. And now layout width and height, so will be taken as the match parent. Layout width is what match parent, and then layout height is what match parent, right? Now end the tag. Here I'm closing the bracket, right? I'm closing the bracket. As soon as I close the bracket, it has automatically taken the end of the row. So you please observe here, this is start of my table row, or here and here I have closed I have written the end of, I have closed the bracket, but I have not closed the tag, right? When I can say I have closed the tag here, where there is a backslash into the tag, right? So this is my end of the tag, right? So this is my start of the table row tag, and this is my end of the table row tag. And now in between this, now one row has been created. Let me go back. So here, as like a layout. Now let me explain and let me shift it so that it will be very clear for you. Right. Well, now this is what start of the table layout tag. This is end of the table layout tag. इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, टेबल रो क्रिएट करने वाले. Now I have written a tag for table row. This is start of the table row and this is end of the table row. Right? ये हो गया हमारा row number 1. Right? Similarly, we will be adding row further rows after this end of the first table row. अभी इस फर्स्ट रो जो मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मुझे क्या कंटेंट डालने हैं, दैट आई विल बी प्लेसिंग इनसाइड दिस टेबल रो, राइट? दैट आई विल बी प्लेसिंग इनसाइड दिस टेबल रो. ना कंटेंट्स इन द सेंस मुझे कोई टेक्स्ट डालना है, कोई बटन डालना है, व्हाटसोएवर इट इज, राइट? सो दैट आई विल बी प्लेसिंग within this table row, right? Now let me place the content. abhi what the contents we wish to place, let's say let us place the button. Let us place the button, say, which will be inside this. So start with a button. Yes, अब इस button का height और width क्या होगा? So I want height to match the parent, and I also want the width of this also to match the parent, right? And उसके ऊपर text क्या चाहिए मुझे? Say I am in row 1, right? And end of the tag. Now here here we'll be closing this tag, right? So I'll be saying backslash and end of the tag. So button tag yahi pe khatam ho gaya. This was the start of the button tag, and here immediately this was start of the button tag, and over here end of the button tag. You please observe a backslash over here. मतलब ये tag यहीं पे शुरू हो गया, यहीं पे खत्म हो गया. इस केस में ये tag यहाँ पे शुरू हो गया, but खत्म नहीं हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया. Why? Because we wish to put something inside it, right? So again go back, this is what start of the first button. I am in row 1, it has been placed, right? Match the parent. And well, एक रो में एक बटन हो गया हमारा. Now let us create one more row. So here I can copy paste the whole content, or else for you right now I'll be creating the another table row rather. This is table row. ID यहाँ पे मैं क्यों mention कर रही हूँ, because I wish that you should know कि ये कौन सा row चल रहा है. So which we may use somewhere in our program. Say the width of this, again this table row should be match parent, then height of this should be again match parent,
right? Or now close the tag. This is not end of the tag. And now this is again it has created end of the table row as well. अभी इसके बीच में let us say put ये बटन कॉपी करते हैं यहाँ से और ये रो 2 में डालते हैं और यहाँ पे बोलते हैं आई एम इन रो 2, राइट? सी अभी आई व्हाट वाज आवर इंटेंशन कि हमें कैसे क्रिएट करना था. नाउ लेट मी बिफोर दैट टेल यू कि हमारा कोड कैसे बन गया है. बिफोर दिस लेट मी एक्सप्लेन कि हमारा कोड कैसे बन गया है. सो बिफोर दिस ये हो गया हमारा टेबल 1, उसके अंदर एक बटन है एंड ये बन गया टेबल रो 2, सॉरी दिस इज व्हाट, दिस इज रो नंबर 1 जिसके अंदर एक बटन डाला है एंड दिस इज आवर रो नंबर 2 जिसके अंदर भी एक बटन डाला है एंड बोथ द रोज आर इनसाइड द टेबल लेआउट. नाउ आई कैन go on adding as many rows as I want, right? Now here initially what we wished that हमारा फर्स्ट बटन पूरे इस पे स्पैन हो जाए और उसके नीचे एक्चुअली हमें दूसरे रो में 3 बटन चाहिए थे, राइट? सो लेट अस ऐड 3 बटन चाहिए तो लेट अस ऐड 3 बटन्स. लेट अस कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर इटसेल्फ. बटन 2 हो गया, फिर पेस्ट वन मोर बटन. I'm in row 2, so I'm in row 2 और but मैं हूँ बटन 1, so say B1 which will make us a difference. B1 in row 2 and यहाँ पे let's say B2 in row 2 and here say B3 in row 2. Now I hope you can see to the right side. ये हो गया था हमारा रो 1. अभी रो 2 में बटन 1, बटन 2 और बटन 3, 3 बटन बन गए हैं, राइट? लेकिन ये जो पहला वाला जो रो है उसमें एक ही बटन था एंड दैट बटन हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ फर्स्ट कॉलम. अभी कैसे हो गया, उसने 3 कॉलम कर दिए हैं. व्हाई 3 कॉलम? नाउ व्हाट टेबल डज, table will make the number of as many number of the columns, right? It will create as many number of the columns which are created in a table in a row which has maximum number of the child, right? जैसे कि ये जो रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 में हम लोगों ने 3 बटन्स डाले, मतलब 3 चाइल्ड है रो नंबर 2 में. तो रो नंबर 2 ऑब्वियसली ये जो रो है ये इसने 3 कॉलम बना लिए खुद के, राइट? सो जितने भी सारे रोज है तो रो नंबर 2 में 3 चाइल्ड है विच इज ग्रेटर देन द 1 एज कंपेयर टू द फर्स्ट रो. तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट वाला रो है उसके भी 3 कॉलम बना देगा, राइट? अगर मैंने समझो अभी थर्ड रो बना लिए और थर्ड रो में मैंने 2 ही बटन डाले, राइट? बट स्टिल इट विल क्रिएट द 3 कॉलम्स और ये यहाँ पे जगह एम्प्टी छोड़ेगा, यहाँ पे जगह उसने एम्प्टी छोड़ी है as like over here, right? As like over here. Why? Because the maximum number of the columns has been created into the table row number 2. So जितने भी maximum जिस किसी रो में maximum number of the columns बन जाएंगे वो number of columns पर सारे rest of the rows को apply करता है. I hope it is clear, right? Now what if कि I want to span कि ये जो पहला वाला बटन है मुझे पूरे स्क्रीन पे चाहिए क्योंकि वो अकेला ही चाइल्ड है तो उसका ये खुद का है पूरा रो, so it should span over this, right? So we would say stretch. Now for that we will be using a property as say stretch column which is the attribute of the table layout. So I'll be saying stretch columns and here I'll be pasting a value as a star, right? Now it means it will try to occupy the whole screen. Once this stretch column has been mentioned, now I can go to ये table 1 है और जिसका ये button 1 inside this table row, right? So here I'll be writing, here I'll need to mention the span now, layout span. So here I'll be saying layout span. अभी मुझे कितना span चाहिए here
3, राइट, क्योंकि 3 कॉलम है, रो 2 में 3 कॉलम है, इसलिए मुझे ये चाहिए कि एक ये जो बटन है it should get span all over 3 columns, right? It should get span all over 3 columns. If I mention 2, see, if I mention 2, it's getting spanned over 2 columns. Abhi, why this layout span attribute is working? Because I have mentioned stretch column over here. टेबल लेआउट का स्ट्रेच कॉलम मैंने इनेबल कर दिया है, दैट इज वाई ये जो स्पैनिंग है दिस इज बीइंग वर्किंग ओवर हियर, राइट. सो स्ट्रेच लेआउट स्पैन 2 मतलब वो 2 कॉलम पे स्पैन करेगा खुद को, एंड इफ आई से 3 वो खुद को स्पैन करेगा all over 3 columns, right? And now it is as per what we expected and what we thought of initially, जो हमें चाहिए था. This is what our output into the preview. Now let us run this program, select my device and run the program, rerun. My emulator was already on somewhere. I hope the Gradle is building at the bottom. See, my Gradle is building at the bottom. By that time I need to wait. And let me check out my emulator. I'm just waiting. No, let us cancel it. Yes, emulator run हो रहा है इस साइड में. Please observe, emulator run हो रहा है राइट साइड में. यस, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एक बटन पूरे फर्स्ट रो में आ गया और यहाँ पे 3 बटन पूरे सेकंड रो में आए. नाउ आई कैन गो ऑन क्रिएटिंग एज मेनी रोज एज आई वांट. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कितने मैक्सिमम कॉलम्स कितने बनेंगे. जिस किसी भी रो में जितने भी मैक्सिमम कॉलम्स है, those number of the maximum columns would be applicable to all the rest of the rows. And what do you mean by columns? हम लोग एक एटम एक व्यू प्लेस कर रहे हैं तो वो एक कॉलम बना रहे हैं. यहाँ पे एक बटन प्लेस किया उसने एक कॉलम बना दिया, और एक बटन प्लेस कर दिया उसने एक कॉलम बना दिया, और एक बटन प्लेस कर दिया उसने कॉलम बना दिया. So with this we have done with our table layout.